economic rejuvenation at the cost of human development can never be sustainable. Evidence shows that nations can never experience sustainable progress unless there is human capital accumulation, i.e., improvement in the quality of population. Undisputedly, health has a major role to play in human development. In Pakistan, health remains one of the most neglected areas in policy matters. For fiscal year 23, the budget for healthcare is a mere 2.1% of GDP. This lack of attention from the government towards healthcare has led to a deterioration in the quality and quantity of the facilities provided. Annual per capita spending on healthcare in Pakistan is a mere $40, one of the lowest in the world. Out of this, the government spends only 1/3, the remaining is covered out of pocket. The infant mortality rate stands at 56.9 deaths per 1,000 live births, and the maternal mortality rate at 186 per 100,000 births. Only 0.6 hospital beds are available per 1,000 persons. Basic health units and rural health centers remain largely inaccessible, understaffed, and/or deserted. Given that human capital is the foundation of sustainable economic growth, the recent budget cuts in social spending will worsen the condition of the healthcare infrastructure. With the skyrocketing cost of living, rising poverty and the Sehat card's uncertain fate, it is important to talk about healthcare in Pakistan. Owing to the limited capacity and deplorable conditions of government hospitals, the majority of the population avoids going there, preferring, instead, to visit local peers and amils to seek relief from their ailments. Many even resort to applying desitakas, home remedies, shared on WhatsApp groups, which often end up worsening the condition of the patient. UHC remains a neglected area. The only other alternative available for poorer segments is to seek healthcare from affordable private doctors. Contrary to expectations, this also poses a high risk. Going by the Labor Force Survey 2020-21, we can see that 37.2% of medical practitioners in Pakistan do not hold a degree in medicine. 25% of these do not hold a degree in any discipline. Of traditional and complementary medicine professionals, 69% are practicing without any degree. Most of these medical specialists end up prescribing short-term fixes to manage the symptoms, rather than accurately diagnosing the disease. Antibiotics are prescribed without reason, leading to increased antibiotic resistance. Vaccine hesitancy, lack of focus on preventive measures, increasing population and resurgence of COVID-19 have increased the demand for healthcare in Pakistan, but the rising cost of living has crippled the capacity of the poorer segments to afford it. Achieving universal health coverage by 2030 is a key UN goal set in the Sustainable Development Goals. The government's lack of focus on the health sector means we are lagging behind other countries. The main issue is the lack of funding, and the big question remains, with a meager tax base of only 2 million taxpayers, how can the government finance UHC? This can be done by creating opportunities for public-private partnerships between the government and health insurance providers. Mandatory health insurance for all can be a great leap towards achieving UHC. A health tax can be imposed under which unhealthy items such as tobacco can be taxed, and the revenue collected can be diverted towards healthcare. Digital health platforms should be made ubiquitous, allowing women and children to access good quality and affordable healthcare from the comfort of their homes. Some external borrowing can also be directed towards the health sector. In this regard, the $300 million allocated to the development of National Health Support Program by the World Bank is a step in the right direction. There is also a need for greater moderation in the healthcare sector. Stringent conditions must be met by all applicants before licenses to practice medicine are issued. However, it is not just a money problem. As a nation, there is a need for a cultural change where there is greater focus on preventive steps. This will help improve efficiency in the healthcare sector by reallocating resources to their most productive use. In Pakistan, 20 infants remain unvaccinated, 200 women lack access to family planning services. Although such preventive measures, vaccines and family planning services,
have very insignificant costs, the government has failed to ensure adherence due to demand-side constraints. Recent policy measures, such as the Sihat card, cover the healthcare expenses of patients admitted in hospitals. By and large, the greatest fraction of healthcare expenses is accounted for by visits to OPDs and the purchase of medicines, both of which remain uncovered under the program. The writer is a lecturer of economics and research fellow at IBA, Karachi. Published in Dawn, April 8, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इंसानी तरक्की की कीमत पर माशी अहिया कभी पायदार नहीं हो सकता। शवाहिद से पता चलता है कि कौमें कभी भी पायदार तरक्की का तजुर्बा नहीं कर सकती जब तक कि इंसानी सरमाए का ज़ख़ीरा न हो, यानी आबादी के मेयार में बेहतरी न हो। गैर मुतनाज़ा तौर पर सेहत का इंसानी तरक्की में एक अहम किरदार है। पाकिस्तान में सेहत पॉलिसी मामलात में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले शुबों में से एक है। माली साल 23 के लिए सेहत की देखभाल का बजट GDP का सिर्फ 2.1% है। हुकूमत की जानिब से सेहत की देखभाल की तरफ तवज्जो न देने की वजह से फराहम की जाने वाली सहूलियात के मेयार और मिकदार में गिरावट आई है। पाकिस्तान में सेहत की देखभाल पर सालाना फीकस खर्च सिर्फ $40 है, जो दुनिया में सबसे कम है। इसमें से हुकूमत सिर्फ 1/3 खर्च करती है, बकिया जेब से ढका हुआ है। नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात फी 1000 जिंदा देशों में 56.9 है और ज़चगी की शरह अमवात 186 फी 100,000 पैदाइश है। फी 1000 अफराद पर सिर्फ 0.6 अस्पताल बेड दस्तयाब हैं। बुनियादी सेहत यूनिट्स और देही सेहत के मराकज़ बड़ी हद तक नाकाबिल रसाई, अमले की कमी और वीरान हैं। ये देखते हुए कि इंसानी सरमाए पायदार इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद है, समाजी अखराजात में हालिया बजट कटौती सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे की हालत को मज़ीद ख़राब करेगी। ज़िंदगी गुजारने की बढ़ती हुई लागत, बढ़ती हुई गुर्बत और सेहत कार्ड की गैर यकीनी किस्मत के पेश नज़र पाकिस्तान में सेहत की देखभाल के बारे में बात करना ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों की महदूद गुंजाइश और ख़राब हालत की वजह से आबादी की अक्सरियत वहां जाने से गुरेज करती है। इसके बजाय मकामी पैरों और आमिलों के पास जाकर उनकी बीमारियों से निजात हासिल करने को तरजीह देते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर किए जाने वाले देसी टोटका, घरेलू इलाज का भी सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मरीज की हालत खराब हो जाती है। UHC अब भी एक नज़रअंदाज किया गया इलाका है। गरीब तबकों के लिए दस्तयाब वाहिद मुतबादिल ये है कि सस्ते निजी डॉक्टरों से सेहत की देखभाल हासिल की जाए। तवक्कुआत के बरक्स ये भी एक आला खतरा है। लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 37.2% मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास मेडिसिन की डिग्री नहीं। इनमें से 25% के पास किसी भी शोबे में डिग्री नहीं है। रिवायती और तकमीली तिब के पेशावर अफराद में से 69% बगैर किसी डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर तिब्बी माहिरीन बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस करने के बजाय अलामात का इंतज़ाम करने के लिए कलील मुद्दती इस्लाहात तजवीज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स बगैर किसी वजह के तजवीज़ की जाती हैं, जिससे एंटीबायोटिक मुज़ाहमत में इजाफ़ा होता है। वैक्सीन से हिचकिचाहट, एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो न देना, बढ़ती हुई आबादी और कोविड-19 के दोबारा उभरने ने पाकिस्तान में सेहत की देखभाल की तलब में इजाफ़ा किया है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने की बढ़ती हुई लागत ने गरीब तबकों की इसके अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत को मफलूज कर दिया है। 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का हुसूल पायदार तरक्की के अहदाफ में तयशुदा अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम हदफ है। हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे पर तवज्जो न देने का मतलब है कि हम दूसरे ममालिक से पीछे हैं। बुनियादी मसला फंड्स की कमी है और बड़ा सवाल बाकी है, सिर्फ 20 लाख टैक्स दहिंदगान की मामूली टैक्स बीस के साथ हुकूमत UHC को किस तरह माली आनत फराहम कर सकती है। ये हुकूमत और हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कुनिंदगान के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके पैदा करके किया जा सकता है। सबके लिए लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस UHC के हुसूल की तरफ एक बड़ी छलांग हो सकती है।
एक हेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है जिसके तहत तंबाकू जैसी गैर सेहत बख्श अशिया पर टैक्स लगाया जा सकता है और जमा होने वाली आमदनी को सेहत की देखभाल पर मुंतकिल किया जा सकता है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को हर जगह बनाया जाना चाहिए जिससे ख्वातीन और बच्चों को अच्छे मेयार और सस्ती सेहत की देखभाल तक रसाई हासिल हो सकती है। उनके घरों का आराम। कुछ बैरूनी कर्जे भी सेहत के शोबे की तरफ मोड़े जा सकते हैं। इस सिलसिले में आलमी बैंक की जानिब से नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की तरक्की के लिए मुख्तस $30 करोड़ दुरुस्त समत में उठाया गया कदम है। सेहत की देखभाल के शोबे में ज्यादा एतदाल की भी जरूरत है। प्रैक्टिस मेडिसिन के लाइसेंस जारी करने से पहले तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को सख्त शराइत को पूरा करना होगा। ताहम ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। एक कौम के तौर पर एक सकाफती तब्दीली की जरूरत है जहां एहतियाती इक़दामात पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। इससे सेहत की देखभाल के शोबे में कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और वसाइल को उनके सबसे ज्यादा पैदावारी इस्तेमाल के लिए दोबारा मुख्तस किया जाएगा। पाकिस्तान में 2 करोड़ नौज़ायदा बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई। 200 मिलियन ख्वातीन खानदानी मनसूबाबंदी की खिदमात तक रसाई से महरूम हैं। अगरचे इस तरह के हिफाजती इक़दामात वैक्सीन और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खिदमात के बहुत कम अखराजात हैं, लेकिन हुकूमत तलब की रुकावटों की वजह से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। सेहत कार्ड जैसे हालिया पॉलिसी इक़दामात हस्पतालों में दाखिल मरीजों की सेहत की देखभाल के अखराजात का अहाता करते हैं। मजमूई तौर पर सेहत की देखभाल के अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा OPDs के दौरों और अद्वियात की खरीदारी से होता है, जो दोनों इस प्रोग्राम के तहत बेनिकाब रहते हैं। मजमून निगार IBA कराची में मुआशियात के लेक्चरर और रिसर्च फेलो हैं। अखज़ शदा बतारीख 8 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.